हेलो फ्रेंड्स। तो चलतु सूर्य बैच नेक्स्ट टॉपिक लैटिट्यूड एंड लंगिट्यूड। ओके, तो की हाइलाइट्स कौन कौन थी आपण मानक कहि देथि ना आपनकर रहिबो ना क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट डेली। ओके, फ्री लाइव क्लास रहिबो, डाउट क्लियरिंग क्लास एवं फ्री पीडीएफ। ओके, तो चलतु ना चलतु फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। ओके, तो चलतु लैटिट्यूड आउ लंगिट्यूड। तो मु फर्स्ट टॉपिक सार देती ना सोलर सिस्टम, तापर नेक्स्ट टॉपिक ना अर्थ जो कि लैटिट्यूड और लंगिट्यूड। ओके, तो चलतु what is latitude and longitude? Okay, the first person to calculate the size of earth what is person थिले। ओके ओके, ये ना एराटोथेनिस एराटोस्थेनिस एराटोस्थेनिस थिले जे कि पृथ्वी साइज को मापिया पे कैलकुलेट करिया पे स्टार्ट करथि। he realized that he realized that earth can be divided into basic grid of lines called as longitude। ओके, ना कौन कहले ना अर्थ कैन बी divided into basic grid or lines called as कौन ना longitude and latitude which would help in pinpointing a location। ना गोटे ग्रिड दरकार जदि हम अर्थ चारिपटे जदि किसी कौन ना बेसिक ग्रिड देदबा लाइन देदबा तो पॉइंटिंग आउट करिया पे हम कोठी अछंती लोकेट करिया पे बहुत सहज हो। ओके ना एराटोस्थेनिस एराटोस्थेनिस की ना फर्स्ट पर्सन जे कि अर्थ साइज को कैलकुलेट करिया पे चाहिए कि एराटोस्थेनिस मु एठी बोल्ड लेटर लिखि देछि आपण देखि परथे। ओके, तो देखो लैटिट्यूड इज ए जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट specifies a point on the earth surface। it is tells whether a point is either north or south। से कहले पॉइंट कौन ना आइदर कौन ही थिबो नॉर्थ रु साउथ नाले साउथ रु नॉर्थ। ओके, हम कहि रखि दी एटा मन को अर्थ सरफेस सॉरी ठीक से तो डायग्राम तो मोर जानि चंती को भले। ओके, जो पैरेलल है कि जोरा सब जीवो। ओके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर जोरा पैरेलल है कि अछि दिस इज कॉल्ड एज कौन लैटिट्यूड। कौन ना लैटिट्यूड कहबा। ओके, और जोरा एक्सिस जो पोल सहित जो आसीबो सेटा को कौन कहबा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रहइबो जोटा सेटा को हम कौन कहउचंती ना लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूड इज एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री इक्वेटर रो 0 डिग्री। लैटिट्यूड इज एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल। ओके, नॉर्थ टू साउथ रो देखिया कले। ओके, longitude is a geographical coordinate that specify a point east west position। कौन ना ईस्ट वेस्ट पोजीशन को कौन करिवो आइडेंटिफाई करिवो। आउ on the surface of earth a celestic body surface। okay, it is an angular measurement that usually expressed in degree and denoted by Greek letter lambda। की लेटर द्वारा स्पेसिफाई करा है ना लैम्डा। मेरिडियन कनेक्ट पॉइंट विथ द ओके, तो चलंतु नेक्स्ट स्लाइड।
तो मेरिडियन कनेक्ट पॉइंट विथ द सेम लॉन्गिट्यूड लाइन्स रनिंग फॉर पोल टू पोल देखो यहाँ पोल टू पोल दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड ओके तो चलतु नेक्स्ट स्लाइड ना लैटिट्यूड ना लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस पॉइंट measured in degree for the center of earth on the surface of earth okay as the earth at pole is slightly flattened ठीक है slightly flattened अच्छी okay the linear distance at the pole at a degree of latitude is slightly longer than the equator okay for example na it is 68,704 miles at equator okay equator केते ना 0 डिग्री जेते बेले 69,054 miles at 45 degree and 69,407 माने 407 miles at the pole okay the average of 69 miles that is 111 kilometer is taken okay 1 mile equal to how much 1.607 kilometer okay देखो some important parallels of latitude there are 4 important parallels of latitude beside the equator 0 degree the north pole 90 degree and the south pole 90 degree tropic of cancer ना केते tropic of cancer ना केते 23 degree half north in the northern hemisphere tropic of capricorn जाकी 23 degree half in southern hemisphere the arctic circle is 66 degree half north of the equator and arctic circle is 66 half degree south of the equator okay so next slide चलंतु ना देखंतु आपन को ए देखंतु जो पैरेलल लाइन देखि परथु ए पैरेलल लाइन को कोन कहउछन्ते ना लैटिट्यूड ओके और जोटा परपेंडिकुलर है कि पड़े छी अपन देखि परथु दिस इज प्राइम मेरिडियन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ना लॉन्गिट्यूड ओके जो देखंतु एटा नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल रहिला एटा 90 डिग्री साउथ पोल रहिला ओके प्रकृत रे हम पृथ्वी रे एभला किछि गार नाही हम मेजरमेंट और लोकेशन फाइंड आउट करिया पे एक्यूरेटली सेति पे हम निजे ही एभला गार देइछन्ती ओके तो देखंतु एटा 0 डिग्री ओके 0 डिग्री एटा इक्वेटर देखंतु एटा जोटा देखि पारुचंती दिस इज कॉल्ड एज मेरिडियन ऑफ व्हाट ना लॉन्गिट्यूड ओके तो देखंतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर 0 डिग्री ओके ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ आ देखो आर्कटिक सर्कल केते अछि ना 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ एपटे मध्ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न केते तार नॉर्थ माने एपटे उल्टा कर दे साउथ ओके तो बुझ पले ठीक तो चलन तो नेक्स्ट स्लाइड को ना longitude on the longitude between the tropic of cancer and the tropic of capricorn latitude देखो on the latitude between the tropic of cancer and the tropic of capricorn the middle zone is exactly overlaid at least one year okay ना कौन कहला ना tropic of cancer tropic of capricorn and cancer भीतर midday माने दिनर मध्यवर्ती काल रे सन पूरे एक्जेक्टली ओवरहेड ता सीधा रे आछे सेति पई एठारे बहुत सूर्यकिरण पड़े दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड एज टोरॉइड जोन ए जोन को कोन कहबा ना टोरॉइड जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहला और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहला ओके आपन को आउ थरे देखियो ना देखंतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओके एट जेते बेले सूर्य अछि तो ओवरहेडेड हे कि अछि तो एठी मैक्सिमम कोन हबो खरा हबो ओके बुझि परले दिस इज ए जोन टा को कोन कहबा
ना टॉरॉइड जोन की जोन टॉरॉइड जोन टी जोन मध्य तुम निजे कहि पारिबो ओके बुझि गेल चलंतो one let on no latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun never shine over it. माने shine करिवनी केबे okay the angle of ray of sun continues to decline towards the pole okay as such the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle is the northern hemisphere and Tropic of Cancer Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is the southern hemisphere. Okay, and moderate temperature. This is called as temperate zone. Next, कहले ना कौन जेते बेले continuously कौन नॉर्थ पोल रु साउथ पोल आड़ को कौन ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल मध्य जेते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एवं साउदर्न हेमिस्फीयर रे सूर्य टिल्ड होगी जिते बेले तार किरण दउची जो रीजन रे टेम्परेचर मॉडरेट होची सेही जोन टाको कोन कहउचंती ना टेम्परेट जोन ओके द एरिया in the northern hemisphere between the Arctic Circle okay the northern pole and the Arctic Circle and the southern pole is the northern hemisphere are very cool माने जेते बेले से आर्कटिक साइकिल ऑफ कौन साउथ पोल ओके जेते बेले सूर्य से टिल्ड हेकि रहउची तो साउदर्न पोल रे निहाती से ठंडा होथबो ओके सो दिस इज कॉल्ड एई जगह को कोन कहउचंती ना फ्रीज जोन ओके की जोन फ्रीज जोन आउ थरे को कहि दउ ना जेते बेले सूर्य एठी टिल्ड हेकि अछि देखंतु एठी टिल्ड हेकि अछि जेते बेले एठी सूर्यर किरण पडुची एठी पडुची तो एठी कोन होथबो गरम लागुथबो किंतु एठी कोन लागुथबो पूरा ठंडा ओके এই জোনটাকু কি জোন কହୁଛି এটাকু কোল্ড জোন ଆଉ এইটাকু টেম্পরেট জোন ওকে longitude देखो longitude is an angular distance okay measured in degree along prime okay prime meridian east to west ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ and equator okay prime meridian जो longitude अच्छे और longitude on the globe is shown as a series of semicircle running through the equator from pole to pole आपण देखि पारथबे मु कहि देइतली एटा देखन दउथरे आपण देखि पारथबे सर्कल वाला घुरी ए देखि पारथबे एटा को कोन कहउचंती ना लॉन्गिट्यूड ओके ना कोन 0 डिग्री रो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन अछि ए पॉइंट ओके this is the prime meridian जोटा 0 degree from the which all meridian move from the 180 degree east to west okay केते मूव करबे ना 180 डिग्री पूर्वरु पश्चिम को they are they have one very important function determining local time in the relation to GMT greenwich meridian time okay जाको GMT बोली कहउचंती sometimes called as world time मध्ये आटा कहउचंती okay relation between the longitude and time ना कौन अछि ना because to earth makes an complete केते गोटे revolution ପାଇଁ केते 360 degree revolution in one day 24 घंटा जोटा कि तो हम 24 घंटा it goes through 15 degree in 1 hour माने करो गोटे घंटा रे केते ना में केते 360 डिवाइड बाय केते 24 आवर तो 1 आवर हम पाई परिबा ना 1 आवर केते ना 15 डिग्री
कौन बुलुची ओके ओके इन 1 आवर केते ना 15 डिग्री तो सेही भले हमें बाहर करबा ना गोटे मिनिट रे केते 1 डिग्री ओके अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सॉरी वेस्ट टू ईस्ट माने पश्चिम रु पूर्व को घुरुची सो एवरी 15 डिग्री वी गो टू ईस्ट हम प्रत्येक गोटे डिग्री नुहे सॉरी 15 डिग्री कुआडे घुरुचंती ना कुआडे को ना पूर्व आड़ को लोकल टाइम 1 आवर हायर ओके जिते बेले आम 15 डिग्री पूर्व को जाउछंती तार पिछा आड़ को गले जो लोक थे भावे ना जो गोटे घंटा आगर अच्छा इफ वी गो वेस्ट जिते तुम पिछा को जाऊच लोकल टाइम विल बी डिलेड बाय 1 आवर तुम जिते पछक जीव मनकर पूर्वर पश्चिम मनकर ये अच्छ जिते बेले मनकर एटा कौन वेस्ट ईस्ट बुझल जिते बेले मु वेस्ट रु ईस्ट को जीवी ओके ना जिते बेले हमें गो फ्रॉम 15 डिग्री कोडू ना 15 डिग्री केते केते जीवा ना ईस्ट 15 डिग्री यदि पूर्व आड़ को जीवा ओके लोकल टाइम केते ना गोटे घंटा आगुआ थी केते 1 आवर आगुआ थी आ जिते बेले पुणी हमें पश्चिम पूर्व पश्चिम को फेरिबा ओके सेते बेले केते -1 डिग्री डिले ही थी ओके मनकर आगर मनकर 12टा बाजी मनकर तो आपण बारे केते 11टा बाजी ओके तो चलंतु thus we may conclude that places east of green we see the sun earlier सेठी पई ना we conclude that places of east of green wings रो जो ईस्ट पूर्व पाखरे सेठी पई कोन सूर्य बहुत फास्ट देखा जाए ओके अर्लियर गेन टाइम बेसी समय नहीं मध्य whereas place west green we seen the sun later and lose time जेते सेठी पई बहुत समय पर देखा जाए एवं लूज टाइम को टाइम टाको घटे दिए ओके तो चलते नेक्स्ट स्लाइड टाइम जोन एंड स्टैंडर्ड टाइम ना स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन इन ऑर्डर टू कीप देयर अपॉइंटमेंट ट्रैवलर गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द कंट्री टू अदर we sorry to the other would have to keep changing their watches okay this is very inconvenient and impractical ना कहला इन ऑर्डर टू कीप देयर अपॉइंटमेंट मने कर गोटे जो अरुणाचल कथा आपण जानि थिबे जेहेतु एपटे जेते बेले आपनकर एपटे जेते बेले देखिबे हमरो पश्चिम पटरे समस्तकर कोन फास्ट टाइम हे जाउछ तो एपटू गला बेलू संध्या हो जाऊँगी 4टा 4:30 बेलू पूरा संध्या राति हो जाऊँगी सो से गोटे कंट्रोवर्सी होता से वाचेस युक्ति तर्क हो गोटे स्टैंडर्ड टाइम को करते जहाँफल कि सामान समस्त ओके इन लार्ज इन लार्जर कंट्रीज सच एज कनाडा यूएस चाइना एंड यूएसएसआर it would be inconvenient to have a single time zone so these countries have multiple time zones so USSR Canada USA and China कौन ना have multiple time zone एंकर गोटे standard time zone ना एंकर multiple standard zone okay there are 5 time zones each in both Canada and USA 5 time zone अच्छी in both Canada और USA रे Atlantic time zone Eastern, Central, Mountain, and Pacific time zone. Okay. The difference between the Atlantic and Pacific coastal local time is almost 5 hours. तो जानी पड़ते ना difference between the Atlantic और Pacific coastal local time केते केते difference हुआ ना almost 5 hours. Okay. There are total केते ना 11 time zone in Russia. रशिया रे कितने time zone अच्छी ना 11टा. Okay. तो चलन तो नेक्स्ट स्लाइड इंटरनेशनल डेट लाइन
ना इंटरनेशनल डेट लाइन IDL इज an imaginary demarcation line. ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन गोटे इमेजिनरी demarcation. Okay, line on the earth surface running from the north pole to the south pole. Okay, demarcating the change from one calendar day to next. जहाँफल कि आम कैलेंडर चेंज होची आज आज के आप जापर आज के 22 काली 23 ये चेंज होची. ओके, ए पर्सन हु गोज फॉर ईस्ट टू वेस्ट जिते पूर्व पश्चिम जाऊँगी अराउंड द वर्ल्ड गेन. ओके, कौन करुच्ची ना टाइम टिके बढ़ी जाऊँगी और सेट हिज क्लॉक बैक ऑन 1 आवर जिते बढ़ी जाऊँगी जिते कौन ना गोटे घंटा पीछा को नहीं जाऊँगी फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड केते क्रॉस गोटे 15 डिग्री क्रॉस कला माने केते गोटे घंटा लूज करिवो and would gain 24 hours for the circuit to glow from east to west if they did not compensate by setting their clock forward one day when they cross the ideal. Ideal जेतेबेले क्रॉस करिवे सेतेबेले कोन टाइम डिफरेंस जाने देखा दबो. ओके, on the other hand west to east circumnavigation of the globe loses 1 hour कोन every 15 डिग्री 15 डिग्री गोटे घंटा लूज करिवो. ओके, बट गेन बैक ए डे व्हेन इट क्रॉस आइडियल जेतेबेले इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करिवो ये सेतेबेले पुणी गो बैक करिवो कोन ना गोटे घंटा बैक करिवो. ओके, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज passes through the middle Pacific Ocean approximately the following 180 degree longitude line but deviating to some territories and group of islands. Okay, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते देखो तो फैक्ट अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन ना आइडियल जोन आइडियल जो इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए zigzag line so as to avoid division of the time in smaller countries that lies around 180 degree. ना आइडियल जो zigzag line दिया है कौन avoid division कौन पार्थक्य न करिया डिविजन न करिया टाइम इन स्मॉलर कंट्री जो छोटो कंट्री को न भांगिया अवॉइड जो माने डिविजन टा को न भांगिया कौन करते 180 डिग्री रखिछंती. ओके, पूर्व द थ्री डिफरेंट कैलेंडर डेट देखो आपण आर ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट लोकेशन ऑन अर्थ फॉर द 2 आवर बिटवीन 10 रु 11 UTC each day. For instance, it is Wednesday 23 is to 11. आपण मते कहि परिबे एतिक जो 23 घंटा एटा 23 घंटा 15 मिनिट एटा केते बाजिची. ओके, 12टा गोटे 2टा केते बाजिची आपण मते कहि से भले 10टा 15 UTC थर्सडे इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्राइडे 00:15 minutes in Kirimita Mati. Okay, ideal stay on the meridian of 180 degree until it passes the equator. इक्वेटर को क्रॉस करिया पर्यंत से 180 डिग्री ही रहिबो. टू अनहैबिटेड atolls owned by the United States, Holland Island and Baker Island, just north of the Central Pacific Ocean equator and sits at sea between the Bastory 0.5 degree west and 180 degree. We have least time. Sorry, we have the latest time on the earth. UTC केते 12टा. Okay, the Indian government has accepted to 82 degree 5 मिनटी पूर्व as the Indian standard time. Indian standard time केते ना 82 डिग्री 5 मिनटी उत्तर. ओके, which 5 hours 30 minutes ahead Greenwich Meridian time. जहाँकि Greenwich Meridian time ahead of Greenwich Meridian time केते मिनटी ना 5 घंटा 30 मिनटी वाला. ओके,
जहाँकि 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व passes through the Mirzapur, which is almost 84 kilometer from the Allahabad. Okay. डे नाइट सेविंग टाइम, ओके, एटा किसी दरकार नहीं आपन को, एटा किसी न पढ़ले भी चलेगा। ओके, तो आपन को खाली मन रखिया दरकार ना डे सेविंग टाइम डीएसटी प्रपोज बाय द एस्ट्रोनॉमर ये ना जॉर्ज हुनसन। ओ आपन खाली मन रखिबो कौन ना डीएसटी वाज प्रपोज्ड बाय हु ना एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज हुनसन। ओके, तो चलंतु नेक्स्ट स्लाइड। आज एतिकी थिला तो रहूची।